और आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीख रहे हैं, तो ये काफ़ी हमें जो है आनंद दे रहा है। उसके बाद मैं स्वागत करूँगा भवानी जी का। धर्मेंद्र जी, रियली थैंक यू। आज शायद कम लोग जुड़ेंगे क्योंकि सब जगह पे युद्ध का माहौल बना हुआ है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं और बहुत सी चीज़ों में अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहते हैं। आज का दिन जो है ये सबसे ख़ास दिन है। सबसे ख़ास दिन इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि भारत जो है ये सारी चीज़ों से और युद्ध में अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाला है और इस अहम भूमिका में मैं और आप अगर लीडरशिप सीखेंगे और हम बेहतर तरीके से इसे कर पाएँगे, तो फिर हमारा आगे का फ्यूचर में रोल जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। आज हमारे साथ लीडरशिप के बारे में बताने के लिए डॉक्टर राधेकृष्ण त्रिपाठी जी हैं, जो कि जिनकी जर्नी एक जूनियर मैनेजर से अलग-अलग डिवीज़न में गवर्नमेंट सेक्टर में डायरेक्टर की तरह रही है। वो भी एडवाइज़र भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में एज़ अ कंसल्टेंट भी उनकी जर्नी रही है। उनके 20 साल के एक्सपीरियंस में 20 साल का उनका जो डायरेक्टर लेवल का या हायर अथॉरिटी लेवल का, हायर मैनेजमेंट लेवल का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी, बहुत से लोगों के और लीडरशिप को नज़दीक से देखा। ये सारी बातें आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। आज हम उनसे वन टू वन करेंगे, हम उनके लीडरशिप के कांसेप्ट को समझ लेंगे। लास्ट टाइम आपको पता होगा जिन्होंने सेशन अटेंड किया होगा तो, कि पहली बार सिचुएशनल लीडरशिप और शेयर्ड लीडरशिप के बारे में सुना था उनसे और मुझे वो कांसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा था। तो आज हम नसीबवान हैं कि हमें जो है आज उनका सेशन मिला है। एग्रीकल्चर लेवल में उनकी पीएचडी है और उसी के साथ वो जो है हमें पूरी तरह से एक मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आगे का जो 1 घंटा है ये कैसे जाने वाला है। हम चाहते हैं कि उनसे हम लीडरशिप स्टाइल सीखें और एक बेहतर लीडर बने ताकि हम पूरे विश्व भर में अपने देश को और अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर सकें। तो डॉक्टर त्रिपाठी जी, मैं आपसे विनती करूँगा कि आप अपना सेशन जो है ये आगे करें। आज शायद हमारे साथ कम लोग जुड़े होंगे क्योंकि सब जगह पे आपको तो पता है युद्ध का माहौल है। लेकिन जो भी लोग जुड़े हैं वो आपसे बहुत कुछ सीख पाए आज। बस यही बेटर लाइफ से आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू। थैंक यू शैलेश जी, आपने मुझे एक बार फिर अपने बीच में आने का मौका दिया। और मुझे भी अच्छा लगता है इतने सारे प्रोफेशनल के साथ में इंटरेक्ट करते हुए, और जो आपके बाद में क्वेश्चंस आते हैं उनसे मुझे भी काफ़ी सीखने को मिलता है और आगे उसके ऊपर नए कुछ इंसाइट्स मिलते हैं जिनको मैं और प्रोब करके कुछ अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। सो हर बार इंटरेक्शन आपके साथ जो है मेरे लिए एक नई लर्निंग लेके आता है और मुझे लगता है कि लर्निंग जो है इट इज एवर एंडिंग प्रोसेस, वो कभी खत्म नहीं होती है। और जब तक ये लर्निंग लाइफ की चलती रहती है, नॉलेज का फ्लो चलता रहता है, तब तक लाइफ भी चलती रहती है। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नॉलेज जो है ना, इट इज जस्ट लाइक ए रिवर। अगर ये फ्लो करता रहता है तो ये ग्रो करता रहता है और नदी से जाते जाते समुद्र बन जाता है। ये पहाड़ से निकलता है और बहते बहते जाके इट बिकम्स ए सी, मतलब अनंत ज्ञान हो जाता है। और अगर ये कहीं रुक जाता है, एक तालाब बन जाता है, तो इसके पानी में तरह तरह के डिकेइंग होने लगती है और अल्टीमेटली इट बिकम्स स्टेल। यही नॉलेज की बात भी है। अगर नॉलेज रुक गया एक जगह तो इट बिकम्स स्टेल, इट इज नेवर ए फ्रेश। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आई आल्सो एम बेनिफिटेड। और जो आपने आज का टॉपिक दिया, लीडरशिप स्टाइल्स, ये मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। और मैंने भी लाइफ में देखा कि तरह तरह के लीडर्स होते हैं लाइफ में और सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं और उनसे पता चलता है कि आखिर ये लीडरशिप है क्या चीज़ और कैसे अपनी लाइफ में, क्योंकि हम किसी न किसी फॉर्म में लीडर हैं।
चाहे एक हम आप कह सकते हैं एक सोशल लीडर हो, एक पॉलिटिकल लीडर हो, एक ऑन द जॉब लीडर हो, एक इंटरप्राइज लीडर हो, या इनफॉर्मल लीडर कह सकते हैं हम, जैसे आपके साथ बैठते हैं, 4 लोग बैठे हैं, वहीं कोई ना कोई लीडर बन जाता है, या हम अपने घर में भी हैं, वहां भी हम कभी न कभी एक लीडर के रूप में भी रोल प्ले करते हैं। तो ये लीडरशिप हमारे लाइफ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर हम इसको समझ सकते हैं कि इस लीडरशिप स्टाइल को हम कैसे बहुत सफलता से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वास्तव में उससे बेनिफिट उठा सकें, और हम अपने आप को तो इम्प्रूव करें ही करें, अपने साथ के और लोगों को, हमारे चाहे जिस रोल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम और आगे बढ़ा सकें। तो अब मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये इसमें आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। यस रामकृष्ण जी, प्लीज इन्हें होस्ट बना दीजिए। अब आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो जूम गूगल स्क्रीन, तो इससे पहले कि हम अपने प्रेजेंटेशन पे जाएं, एक आपके साथ छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे बड़े ही फेवरेट लीडर हैं, एंड ही इज मिस्टर रतन टाटा। यस 100%। आई होप आप देख पा रहे हैं। हाँ यस हम देख पा रहे हैं, थोड़ी आवाज कम है। आवाज कम है? हाँ अभी ठीक है, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं जरा अपने जो हमारा, हाँ अभी प्ले कर दीजिए। अब ठीक है था आवाज? आप ऑप्टिमाइजेशन साउंड शेयर करिए, अपना कंप्यूटर का साउंड शेयर करिए, उसमें सेटिंग में साउंड में। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। अभी प्ले करिए सर। हाँ यस, व्हाट इज ओके? हाँ थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। और बढ़ाए आवाज? हाँ और थोड़ा सा, और थोड़ा, हाँ ठीक है सर। हाँ यस अभी करिए। सोच वाला वो शख्स जो मुनाफे से पहले लोगों को रखता है, जिसके नाम के मायने हो उसूल और लोगों का भला। रतन नवल टाटा आते हैं उन जमशेदजी टाटा के खानदान। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की आवाज कम है सर, तो इसके लिए वीडियो की आवाज थोड़ी और बढ़ाई, जैसे आपने बढ़ाई थी ना अभी, और थोड़ी बढ़ा। मैंने तो उसको फुल वॉल्यूम किया हुआ है। हाँ नहीं, जो आपने अभी सेट किया था ना, उसको मीडियम पे रखा था आपने, हाँ उसको और थोड़ा सा बढ़ाइए। टाटा समूह का चेयरमैन बनकर इसे कंपनियों के एक बेहतरीन भारतीय समूह से दुनिया का विशाल उद्योग समूह बनाया। अभी ठीक है सर? हाँ इस भूतपूर्व चेयरमैन को हाँ यस, और शायद दुनिया के बेहतरीन उद्योगपतियों, निवेशकों और समाज सेवियों में गिना जाता है। आइए देखें कि कैसे ढाला उन्होंने अपनी तकदीर को। तिथि
पास अक्सर मोटरसाइकिल वगैरह वैसे ही छोड़ दी जाती थी। और हम स्कूली बच्चों के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी पेट्रोल टैंक खोलकर उसमें चीनी डाल देना, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ दूर चलकर इंजन सीज हो जाएगा। जांबाजी का एहसास होता था। आजादी के आसपास की बात है, मैं 10 साल का था शायद। अपने देश के लोगों के लिए एक जज्बा तो महसूस होता ही था। बच्चे थे पर आजादी पाने की इच्छा तो थी ही। से और सीखा, हम मुनाफे में आ गए, डिविडेंड्स दिए। से और सीखा, हम मुनाफे में आ गए, डिविडेंड्स दिए, घाटे बिल्कुल खत्म कर दिए। लेकिन दिक्कत ये हुई कि नेल्को टाटा पावर कंपनी का हिस्सा बन गई और इसकी पहचान खत्म हो गई। ग्रुप चेयरमैन बन गए। ऐसा करके क्या सिखाया उन्होंने? कंपनियों को डुबोना, उनकी तकनीक और फालतू के ख्यालों का जुनून। बहुत गड़बड़ करने वाले इंसान है वो, आसान कामों को मुश्किल बना देते हैं। काश जे जानते हो कि वो क्या कर रहे हैं। बारी थी लोगों को कुछ देने वाले की। सन 2003। गोली चला दे, ये भी ख्याल आया कि क्या गोलीबारी सच में रुक गई है। टाटा वहां है, वो कंपनी के मालिक नहीं है। हो सकता है हर कंपनी में उनका 1% हिस्सा ही हो। रतन टाटा ने किया ये कि लोगों की भलाई के ट्रस्ट को, सेवा के अपने मकसद को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ने का मौका दिया है। असल में कारोबार के साथ लोगों की भलाई वाले काम उतने सामने नहीं आए थे। उस वक्त व्यक्तिगत दिक्कतों को दूर करने वाली बात ज्यादा रही थी। मतलब किसी को ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी वो बंद कर दीजिए वीडियो, चाहिए तो फिर आपकी आवाज आ जाएगी। हाँ सिर्फ ये हाँ अभी आ गई आपकी आवाज। जिम्मेदारी पूरी हुई। टाटा की जो छवि है वो लोगों को अच्छे से याद है। एक शानदार उसूलों पर चलने वाली कंपनी, एक गजब की कंपनी के तौर पर, एक ऐसी कंपनी जिसने खुद को बढ़ाते हुए अपने यहाँ काम करने वालों और स्टाफ की काफी चिंता की है। 2012 में 75 साल के रतन टाटा ने टाटा के समूह की देखरेख के काम पूछते हैं। आप उनको कभी भी खाली बैठे हुए नहीं देखेंगे। हमेशा नया सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं और क्या होगा अगर ये कदम उठाया जाए तो। स्नैपडील जाएंगे और बाद में अंदर से आवाज आए कि मुझे इस तरह चले नहीं जाना चाहिए था। ये आदमी भरोसा करने लायक था। और शायद इसी वजह से भारत और दुनिया भर की तमाम पीढ़ियां रतन नवल टाटा को हसरत भरी निगाहों से देखती है। ये है वो मेगा आइकॉन जिसने अपने पंख फैलाए लोगों के भले के लिए। Yes, sorry, yes, yes. I have just not played the whole video. Right. But काफी अच्छा था। Because just I wanted to tell you that how a person becomes a leader. Definitely. Starting from a naughty child of making lot of mistakes. yes. And then he has grown such a big empire. Definitely. और सबसे बड़ी उसकी वजह क्या थी कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो थी वो बॉर्न नहीं थी, बराबर है। but he had developed it over years with his experience, hard work. तो जो लोग सोचते हैं कि लीडर्स पैदाइशी होते हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि लीडरशिप जो होती है वो आदमी डेवलप करता है, इट इज एक्वायर्ड। तो मैं इसी बैकग्राउंड से एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि ये सिर्फ रतन टाटा की ही बात नहीं है।
आप देखेंगे तो जो हमारा एनुअल वर्ड है, यस, वहां भी आप देखेंगे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके Famous anthropologist Angelus Arian gave a speech called Lessons from Geese. And what follows is my take on that story. It's truly a marvelous sight to see a group of geese flying together in a perfect V formation. Research has shown that as each goose flaps its wings, an intense uplift is created for the birds behind them. Further studies state that this teamwork adds 71% more flying range compared to a goose. It's not only birds, but many animals like your elephants, insects, इन सब के अंदर जो है लीडरशिप का अपना एक पैटर्न होता है, और वो हमें हमारी लाइफ में भी मिला हुआ है, और हमारे कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसी बैकग्राउंड से आपसे अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूँगा, और आशा है कि आप इसको पसंद करेंगे और अपना भी कुछ हमें सजेशन देंगे। मेरा प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं शैलेश सर? क्या हुआ है? हाँ सर, देख सकते हैं ना? यस यस यस। Okay. So I will just go to the I hope it is visible. आप शेयर नहीं किया हुआ है, शेयर करिए। शेयर नहीं किया हुआ है? आपने शेयर नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो मैं इसको शेयर करता हूँ। शेयर अभी आ गया है? हाँ, अभी विजिबल है सर, अभी विजिबल है। विजिबल है? यस यस यस। ये चेंज भी हो रहा है? हाँ, एक मिनट। हाँ यस। गुड। तो अभी मैंने जो आपको थोड़े से वीडियो दिखाने चाहे, इससे पहले काफी लंबे हैं, मैं उनको सारा उसमें टाइम नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरा सिर्फ एक कहने का पर्पज यही था कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, हम सब के अंदर लीडरशिप जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट है। इन वन फॉर्म और द अदर लीडरशिप इज एन एसेंशियल पार्ट, और बिना लीडरशिप के हमारी लाइफ एक बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस मैनर में चल नहीं सकती है। तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर लीडरशिप स्टाइल्स होती क्या चीज़ है और कैसे हम अपने जीवन में इसको अच्छी तरह उतार सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है, हम कहते हैं भाई हु इज एन लीडर? तो ये जनरली जो हमारे एक्सपर्ट्स ने डिफाइन किया हुआ है कि लीडर कौन है? अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस ए ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ए गोल। तो इसमें क्या चीज कॉमन होती है? एक तो गोल होता है, एक हमें कोई गोल अचीव करना है, और किसके थ्रू? ए ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू। यस। और कौन उसको ले आता है? लीडर। सो देयर इज 3 पीपल इन्वॉल्व इन दिस, द लीडर, द पीपल एंड द गोल। और हमेशा एक लीडरशिप जो होती है किसी पर्पस के लिए होती है। दैट पर्पस कैन बी एनीथिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके भी हो सकती है, किसी सोसाइटी को भी लेके हो सकती है, किसी फंक्शन को भी लेके हो सकती है, एंड द लीडर ऑलवेज इज देयर टू स्टीयर द थिंग्स। ये एक मिनट, ये हमारा प्रेजेंटेशन। हाँ, तो लीडरशिप क्या होती है? अगेन, लीडरशिप में एक पर्सन जो है वो दूसरों को किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए कोशिश करता है, दूसरों को प्रभावित करता है, और पूरे लोगों को और जो सिस्टम है उसको इस ढंग से आगे ले जाता है, एक साथ मिला करके, ताकि वो अपने गोल की तरफ बढ़ सके। लीडरशिप में 3 चीजें, 3 पीस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात होती है कि द पर्सन मीन्स
the leader. Second is people. So the person influences the people, and there is a purpose. So the person influences the people to achieve the goal. So what happens that both the person as well as people both get committed to the purpose. जब तक ये कोहेशन नहीं आता है, आप धक्का दे के किसी को पर्पस की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, जब तक कमिटमेंट नहीं आएगी दोनों के अंदर, तब तक सही मामले में लीडरशिप निकल करके नहीं आती है. नहीं आएगी. नाउ हु इज ए लीडर? हमने कहा डिफाइन कर दिया कि लीडर जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करता है टू मेक एफर्ट्स टू अचीव ए गोल. तो लीडर कौन है? वन दैट लीड्स आर गाइड्स. ग्रुप को लीड करता है या गाइड करता है. दूसरा कौन है लीडर? वन हु इज इन चार्ज और इन कमांड ऑफ द अदर्स, जो एक ग्रुप को लीड कर रहा है. और वन हु हेड्स ए पॉलिटिकल पार्टी और एन ऑर्गेनाइजेशन. एक पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन को भी लीड करने वाला हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्मॉल एंटरप्राइज और इट कैन बी ए बिग कॉर्पोरेट. और वन हु हैज इन्फ्लुएंस और पावर स्पेशली ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर. तो जिसके पास इन्फ्लुएंस या पावर है. पावर कैन बी इन बोथ द वेज. आइदर इट कैन बी ए डेलीगेटेड पावर, यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो ऑलरेडी देयर आर सर्टेन पावर्स व्हिच आर यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दैट पोजीशन. द अदर पावर इज एक्वायर्ड पावर. जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो क्या होती है? एक्वायर्ड पावर होती है, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू. राइट, डेफिनेटली. अगर आपको इस बार टिकट वोट दे भी दिया तो अगले बार नहीं वोट देंगे. Yes, 100%. So you have to acquire that power. So power can be either inherited power or acquired power, or you can say delegated power or acquired power. Okay. तो लीडर के अंदर जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, assumes to become a leader. कैरेक्टर्स क्या होते हैं लीडर के अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. पहली बात, उसके अंदर इम्पैथी होती है. जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनसे इम्पैथी होती है. विदाउट इम्पैथी यू कैन नॉट लीड पीपल. डंडा लेके आप एक हर्ड ऑफ एनिमल्स को ड्राइव तो कर सकते हैं कहीं आगे जाने के लिए, बट यू कैन नॉट मेक श्योर दैट द गोल विल बी अचीव्ड. जैसे हर्ड को मौका मिलेगा वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भागेगा. यस यस, डाइवर्ज करेगा. बराबर है. देयरफॉर यू हैव टू हैव एम्पैथी. एम्पैथी क्या करती है? इट क्रिएट्स ए बॉन्ड बिटवीन यू एंड द ग्रुप. वो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है एम्पैथी से ही आती है. यस. आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हैं, आपके साथ कोई बैठा हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम में है, you simply give an empathetic look at him. Right. One look will itself create a lot of trust and comfort level in that fellow. Right. And an unknown bondage will be created between the two of you. Yes, definitely. You have not spoken anything to each other, but an empathetic approach, feeling itself creates the bondage. It's very important. Then consistency. You know what is your goal, what efforts are to be done, so you are consistently working on that. If there is no consistency in your efforts, तो क्या होगा कि आपका जो कोशिश होगी वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी. ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप देखेंगे ऑफिस में कई बार क्या होता है कि बॉसेज होते हैं, वो एम्प्लॉइज के पॉलिटिक्स ग्रुप बना लेते हैं, कुछ लोगों को अपने पास मिला लेते हैं. राइट. और उनको कहते हैं कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, यू नो, टेल मी सम सीक्रेट्स, I will not share with anybody. But then they will also share that with others. That's right. You know, the people do this all sort of tricks. Right. So they cannot be a true leader because this is not an honest approach. So you have to, because if you are honest, right, everybody trusts you. 100%. आप किसी को बेवकूफ बना के 1-2 दिन तो बेनिफिट ले सकते हैं उससे. Yes. But you cannot take benefit forever. Once he understands this, you are cheating him,
then he will certainly go away from it. Then direction. There has to be clear pathway that आपको अपना गोल अचीव करने के लिए किधर जाना है, और वो डायरेक्शन हर एक को क्लियर होना चाहिए. अगर एक आर्मी में कमांडर हैं आप, तो हैव टू एक्सप्लेन टू योर आर्मी और बटालियन दैट आर्मी एनिमी पोस्ट तक जाने के लिए हमें क्या रूट लेना है, एंड ईच वन ऑफ देम शुड नो प्रिसाइजली, so that there is a cohesion. Communication has to be there. Communication is very important, and there has to be a two-way communication. It is always said, जब तक communication two-way नहीं होता है, means मैंने किसी को कुछ convey किया, and my communication has gone to him, he has received it, and he has responded it. Only then the communication is complete. Yes. Generally life में क्या होता है कि हम खुद ही बोलते जाते हैं, and we close our ears. There is only one way traffic. हम बोले जा रहे हैं, दूसरे का रिस्पांस नहीं ले रहे हैं. Right. That can be a speech, that can be a lecture, but it can never be a communication. Communication always has to be two-way communication. Yes, 100%. Need support from all. He has to create a feeling that everybody is important for him. So he will need support of every small individual. Because unless everybody is giving support, he cannot be successful. Right. So assume obligation, और हर एक छोटे से छोटे क्रीचर का भी, हर एक छोटे छोटे मेंबर का भी ऑब्लिगेशन वो रिसीव करता है. That is the characteristics of a good leader. Then what the leader does, he refers to the ability of one individual to influence others. तो जो लोगों के हर एक की इंडिविजुअलिटी है उसको आइडेंटिफाई करता है, and he lets know others also that this fellow has got this capability, this fellow has got this capability. So there is always a reciprocity in the group. Everybody knows everybody's strength. Yes. And the feeling of I am okay, you are okay is transpired all through the group. Right. Everybody knows that nobody is inferior or nobody is superior. Everybody has got certain strengths which is going to contribute to the group, ultimately objective of the group. Right. The influence is exercised to change the behavior of others. अगर आप खुद जिस ढंग से एक एज ए मॉडल काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, अगर हमारे मोदी जी अगर खुद बहुत ऑनेस्ट है, राइट, जिनके खिलाफ कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, बराबर, तो लोगों को दिखाई पड़ता है वो. yes, 100%. And then everybody will try to be like him. अगर वो भी करप्ट होंगे, वो भी पैसे ले रहे होंगे, and people will come to know that he is telling them in a lot of good things, but personally he is not doing that. So लोग भी अच्छे नहीं होंगे, honest नहीं होंगे. Yes. So you change the behavior of others by being a model. Right. The leader possesses a set of qualities or characteristics with which he or she is able to influence others. आपके अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, वो उसको आप डेवलप भी कर सकते हैं, not necessarily that you have inherited that quality. You know? Then leadership is a group phenomenon. It's not that you are alone, you can do anything. You have to understand that unless the group is along with you, you cannot do anything. So what does leader do? It transforms potential into reality. You know, it's not only using people and their potential for, you know, raising the ultimately achieving the goal, but it also increases their moral. उनका moral बढ़ाता है, उनका conduct, उनका ethical aspirations, उन सबको वो elevate करता है. तभी लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करके आपको रिजल्ट देते हैं. So the leader should elevate, inspire and evangelize. लोगों को बताना चाहिए कि आपकी ताकत है. जैसे रामायण में कहते हैं कि हनुमान जी के पास बहुत ताकत थी, लेकिन जब तक उनको बताया नहीं जाता था कि आपके पास ताकत है, तब तक वो जो है उसको समझ नहीं पाते थे. तो मैं आपसे एक छोटा सा इस मौके पर
एक इवेंट शेयर करना चाहूँगा जो हमारे रामायण से लिया गया है। और भगवान राम ने जो है वो जब पुल बन रहा था, तो रामेश्वरम सेतु बन रहा था, तो उन्होंने कैसे इस लीडरशिप को, स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल ये किसी एक अच्छे स्पीकर का मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप देखिए, आई होप सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को। इज इट ऑडिबल? थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करूं? वॉल्यूम सर तेज आवाज करूं? नहीं आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम बढ़ा दे इसका। हाँ थोड़ा सा। एक दफा आप जानते हैं राम सेतु बन रहा था। हाँ, वहीं बड़े बड़े वानर, बहुत बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स उस समय दे वर ट्राइंग टू थ्रो इट इनटू द ओशन ताकि उस राम सेतु आई होप अभी ठीक है ना? गिलहरी भी हाँ ठीक है, पे कंकड़ देकर के बीच में फेंक रही थी, जिसका कहीं कुछ वानरों ने बड़ा मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, ये छोटा सा कंकड़ फेंक रही है, साइड हो जा, मर जाएगी, पांव के नीचे आ जाएगी। और एक गिलहरी को दूर फेंका जो भगवान राम के पास गिरी, जिसको उन्होंने उठाया, उसकी पीठ पे हाथ फेरा। जो आप जानते हैं आज गिलहरी की पीठ पे 3 लकीरें होती हैं। वहीं से एक बड़ा लीडरशिप लेसन और फॉर्मूला भगवान राम ने दिया। इस पहले फॉर्मूला को समझते हैं, सुनते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। How much you did upon how much you could do multiplied by 100. One more time, come on, ध्यान दीजिएगा। How much you did upon how much you could do multiplied by 100. इसका अर्थ क्या हुआ? आप कितना किया, अपॉन कितना कर सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए, वहां बड़े बड़े शक्तिशाली वानर थे जो एक एक 1000 किलो की चट्टान उठा सकते थे, परंतु हंसते मुस्कुराते हुए 500 किलो की चट्टान उठा के लेके जा रहे थे। This means they could pick up 1000 kgs by their capacity, but they picked up 500 kgs only. Multiplied by 100 मतलब they did 50% of their capacity. और उधर छोटी सी मासूम सी गिलहरी जो 50 ग्राम का कंकड़ उठा सकती थी, लेकिन 100 ग्राम का कंकड़ भी बड़ी मेहनत से उठा के लेके जा रही थी। So she could do only 50 ग्राम, but she did 100 grams. इसका अर्थ क्या हुआ? वानर बड़े बड़े अपनी कैपेसिटी का 50% कर रहे हैं, गिलहरी छोटी सी अपनी कैपेसिटी का 200% कर रही है। वो 50 ग्राम उठा सकती थी, परसेंट 100 ग्राम उठाया। ध्यान दीजिए, देखने में क्वांटिटी में वो लेस है, but the Lord sees the intent. Come on, the Lord sees the intent. अच्छा लीडर भी इंटेंट को आइडेंटिफाई करता है, हर छोटे स्मॉल कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। वानर अभी भी हंस रहे थे, लेकिन भगवान राम ने उनको आकर के समझाया, You certainly did less than what you could do. आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे कई वानर हो गए हैं जिनको लगता है कि वही सब कुछ करने वाले हैं। हर ईंट को लगता है दीवार मुझी पे टिकी है। One more time, come on. हर ईंट को लगता है दीवार मुझी पे टिकी है। वहीं भगवान राम ने आके एक लीडरशिप लेसन दिया। Every tiny particle helps bind the gap between a huge structure. ध्यान दीजिएगा, वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट बन जाते हैं ना कंपनीज में, 2 डिपार्टमेंट के बीच में बड़े बड़े गैप होते हैं जो कि छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से फिल किया जा सकता है। समुद्र के अंदर भी बनाने वाले उस पुल की बड़ी चट्टानों के बीच में जो छोटे छोटे गैप थे, वो गिलहरी जैसे जानवरों, पशुओं के कंकड़ों के द्वारा उन गैप्स को भरा जा सकता था। भगवान ने बताया, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कई बार बड़े बड़े हादसों को बचा देते हैं। वन मोर टाइम, कम ऑन। अगर लीडर अच्छा होगा, आपकी कैपेसिटी 1000 की, आपसे 10,000 करा देगा। और अगर लीडर खराब निकला, आपकी कैपेसिटी 1000 की, आप 100 भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? अ लीडर कैन कम्युनिकेट योर वर्थ एंड पोटेंशियल इन सच अ वे दैट यू come to see it in yourself. One more time, come on, come on, come on, come on. एक लीडर आपकी ताकत को आपको इस तरह से कम्युनिकेट करेगा कि वही आपकी ताकत आपको भी दिखने लग जाएगी। आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इसी प्रकार के कई बड़े शक्तिशाली पढ़े लिखे वानर आ गए हैं जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूटर्स के छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना जरूरी नहीं समझते, और उसी कारण उनकी जो कंपनी के पुल है वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों भगवान राम का पुल नीचे नहीं गिरा, चलता चला गया? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूटर्स को भी रिकॉग्नाइज किया। यही एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी है। और दूसरा लेसन, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना कर सकते थे। वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना कर सकते थे। और कई लोग अपने लीडर के इंस्पिरेशन के द्वारा जितना कर सकते थे, उससे भी दे कैन गो एक्चुअली बियॉन्ड देयर कैपेसिटी।
आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड क्षमता है आपके पास, परंतु आप लिमिटेड ही काम करके सेल्फ ग्लोरीफाइड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ सेंटर्ड लीडर बने हुए हैं। आज के छोटे से फॉर्मूला वीडियो में ध्यान दीजिएगा, हाउ मच यू डिड अपॉन हाउ मच यू कुड डू मल्टीप्लाइड बाय 100। आपकी ताकत कितनी है लेकिन आप कितना थोड़ा सा कर रहे हैं। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भरिए और अपने जीवन में झांक के देखिए आपकी असली ताकत है कितनी। आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है लेकिन आप अपने पोटेंशियल को आज तक ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। आप अपने व्यापार में बहुत बिजी हैं और बिजीनेस से व्यापार नहीं बढ़ता, बिजनेस बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता है, बिजीनेस से नहीं बढ़ता। इस बिजीनेस को छोड़ के बाहर निकल के आइए और मेरे साथ आके प्रैक्टिकल फॉर्मूला को अपने एम्प्लॉइज को भेज रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। आई विल सजेस्ट, आज का प्रश्न है, हु इज द मोस्ट इंस्पायरिंग लीडर यू हैव सीन इन योर लाइफ। Great one. Really great. तो यू कैन सी कि कैसे भगवान राम ने इतना अच्छा लेसन दिया हमें मैनेजमेंट का कि आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, इट हार्डली मैटर्स। मैटर क्या करता है कि आप क्या कर सकते हैं और लीडर आपको कितना करने के लिए कैपेबल बनाता है। तो ये एक लीडरशिप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आपको ये मैसेज जो मैं देना चाहता था, इस रामायण का जो मैसेज था उसके माध्यम से आई कुड कन्वे इट टू यू। तो लीडर के लिए बहुत बड़ा एक रोल होता है कि हमारे जो अंदर कैपेबिलिटीज है उसको एलिवेट कर देता है और हम ओवर परफॉर्म कर पाते। तो मोटिवेशन, गाइड करना, कॉन्फिडेंस पैदा करना, कोऑर्डिनेट करना, प्लानिंग करना, इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना, ये लीडर का बहुत बड़ा काम होता है। और ये लोगों की तरफ देखता है, अपनी इंटीग्रिटी अच्छी रखता है, लोगों को एक बड़ा वो दिखाता है कि किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में भी आपका रोल छोटा नहीं है। वो गिलहरी जो है छोटा सा पत्थर लेके जा रही थी, लेकिन अगर उस पुल के, बड़े पुल के ऊपर अगर छोटे छोटे गैप में छोटे पत्थर नहीं डाले जाते तो वो पुल स्टेबल नहीं हो सकता था। तो उसको भी उन्होंने एक बड़ी पिक्चर दिखाई और जो रिसोर्सेज हैं बताया कि देखो कहाँ से क्या मिल सकता है, आपको एक डायरेक्शन दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्टीम है, क्लाउड है, वो आपके अंदर लाता है वो कि हम यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ दैट। एंड जो हमारा कम्युनिकेशन है बहुत क्लियर होता है विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। तो अब सबसे बड़ी बात आती है, जनरली हम बात करते हैं कि अब ये लीडरशिप का कैसे हमारी लाइफ में यूज होता है। तो सबसे बड़ा यूज जो हम लीडरशिप का करते हैं, हम आप सभी अपनी लाइफ में, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं कि हम सारे लोग वी ऑल आर प्रोफेशनल्स एंड इन वन वे और द अदर वी आर ऑल engaged in helping our organization, you know, to achieve certain goals. तो अब लीडरशिप मैनेजमेंट के रूप में हमारे सामने आती है, तो थोड़ा हमें उस पर भी जरा हम ध्यान देंगे। मैनेजमेंट क्या है? इट इज जनरली ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड द एक्टिविटी ऑफ अदर्स। ये जनरली हमने सबने पढ़ा हुआ है, जो अपने मैनेजमेंट के कोर्सेज में हर जगह बताया गया है। और लीडरशिप क्या है? हमने पहले भी कहा कि प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ए कॉमन गोल और शेयर्ड गोल। तो अगर हम, क्या हो गया, ओके, देखें अगर कि एक जो मैनेजर है जो मैनेज करने का काम कर रहा है और एक लीडर है, हालांकि दोनों ही एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अप्रोच में कितना फर्क होता है। मैनेजर क्या करता है? एक प्रोसेस को एडमिनिस्टर करता है। अगर वो शिफ्ट इंजीनियर है, एक प्रोसेस इंजीनियर है, तो जो उसके पूरे सारे मॉड्यूल हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है सारे सिस्टम को, कंट्रोल कर रहा है सारे सिस्टम को।
और उसका एक व्यू जो होता है शॉर्ट टर्म व्यू होता है कि अब आज हम बैठे हुए हैं अपनी शिफ्ट में, तो हमें इस शिफ्ट में जो मशीनरी है वो ठीक से चलती रहे, और उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट में जो आएगा वो देखेगा मेरा काम नहीं है। और अगर कहीं उसको कोई दिक्कत आती है तो लोगों से पूछता है कि अब आगे क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट से पूछता है कि अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय नेक्स्ट गोल, और डायरेक्शन के बेस पे चीजों को इनिशिएट करता है। जो भी उसको जिम्मेदारियां मिली हैं बस उनको पूरा करके ही बिकम्स सेटिस्फाइड। लेकिन लीडर क्या करता है, उन्हीं ऑन द अदर साइड इनोवेट करता है, लुक्स फॉर समथिंग न्यू सो दैट द सिस्टम इंप्रूव्स, डेवलप करता है सिस्टम को। काम तो अपना कर ही रहा है वो, लेकिन काम करने के साथ साथ उसको डेवलप भी कर रहा है, अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंस्पायर कर रहा है सो दैट दे वर्क बेटर। उसके सामने सिर्फ अपनी शिफ्ट का ही काम नहीं है, वो सोचता है कि आगे इस पूरे साल में मैं कितना अपना टर्नओवर बढ़ा लूंगा, हाउ विल आई इंक्रीज माई प्रोडक्शन, हाउ विल आई इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, अपनी टीम को मैं कैसे ज्यादा गोल अचीव करने के लिए आगे ले आऊंगा। सो ही हैज ए लॉन्ग टर्म व्यू। और लोगों से ये नहीं पूछता कि साहब कब करूं, मैं क्या करूं, वो कहता है अब देखो आगे ये करना है और क्यों करना है वो बताता है लोगों को, हम कुछ नया काम कैसे करेंगे। ओरिजिनेट करता है चीजों को, ओरिजिनेट करता है। इनिशिएट करने और ओरिजिनेट करने में थोड़ा सा अंतर होता है। जो इनिशिएट करता है वो किसी डायरेक्शन के बेस पे करता है, जो ओरिजिनेट करता है उसके दिल से आती है बात। ओरिजिनल, ओरिजिनेट कम्स फ्रॉम ओरिजिनल, एक उसके अपने थॉट होते हैं, अपने विचार होते हैं। इनिशिएटिव कैन बी ड्रिवन बाय सर्टेन laid down procedures or systems. So he challenges the status quo due. वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, अचीव हो भी गया अगर तो वहीं जाके बंद नहीं कर देता है, वो चैलेंज करता है कि आखिर इसमें क्या कमी रही है, हाउ आई कैन फर्दर इम्प्रूव दिस। तो ये एक जो लीडर है वो मैनेजर से हमेशा एक अलग ढंग से सोचता है। तो क्यों कि लीडरशिप जो है हालांकि मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन वो सिर्फ काम ही नहीं करवाता है, लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करता है ताकि वो परफॉर्म करे। और अगर मैनेजमेंट और लीडरशिप मिल जाते हैं एंड इट बिकम्स ए मैनेजरियल लीडरशिप, तो क्या होता है, इट अफेक्ट्स द मोरल ऑफ पीपल। जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनका मोरल हमेशा हाई रहता है। आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होते हैं, बैरियर्स नहीं होते हैं, एवरीबडी टॉक्स टू ईच अदर फ्रीली and there is a clear line of communication between the member leader and the group members as well as between the all the participant of the group, और वो बॉटम लाइन तक जाता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं मैनेजर हूं तो मैं अपने डिप्टी मैनेजर को बुला के उन्हीं से बात कर लेता हूं। बहुत सारे आई नो इन द गवर्नमेंट आल्सो इन ब्यूरोक्रेसी people don't want to talk to bottom level people. If somebody is secretary, he will say, I will only talk to the additional secretaries. Additional secretary वो कहेंगे, I will talk only to the joint secretaries because मेरा hierarchy में वही आते हैं, तो he will not talk to the people down below. So, but leader जो होता है वो bottom line और top line दोनों को साथ में लेके चलता है। So, गुड लीडर्स वो नहीं होते हैं जिनको कि मैनेजमेंट ने कुछ दे दिया, रोल दे दिया और उसी को परफॉर्म करके लीडर बन गए वो, बट दे आर मेड, दे डोंट इनहेरिट द लीडरशिप, दे डोंट गेट द डेलीगेटेड लीडरशिप, बट दे आर मेड। एंड हाउ दे आर मेड, इफ दे हैव ए डिजायर एंड विल पावर। अगर आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की और आत्मशक्ति है, देन ओनली यू कैन बिकम ए इफेक्टिव लीडर। क्यों कि अच्छा लीडर क्या होता है कि वो एक सेल्फ स्टडी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ने से ही अच्छा लीडर बनता है। यू कैन नॉट जस्ट बिकॉज यू आर गिवन ए पोजीशन यू कैन बिकम ए लीडर। काफी लोग होते हैं वो कहते हैं आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, आई एम डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ दिस कंपनी, आई एम ऑल इन ऑल ऑफ दिस डिपार्टमेंट। बट अगर आप
अपने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए, इफ यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ मोरल ऑफ योर पीपुल, अगर उनके अंदर अपनी एक डिग्निटी को, सेल्फ रिलायंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन बी ए मैनेजर बट यू कैन नॉट बी ए मैनेजमेंट लीडर, मैनेजरियल लीडर और ए लीडर। तो हमेशा लीडरशिप, हमारे पास दो तरह की लीडरशिप होती है, वन इज फॉर्मल लीडरशिप एंड अदर इज एन इनफॉर्मल लीडरशिप। जो मैनेजमेंट में जो हमें डेलीगेटेड पावर मिलती है, दैट मेक्स मी ए फॉर्मल लीडरशिप। when it happens, when a manager leads by exercising a formal authority, that जो मुझे अथॉरिटी दी गई है मैं उसी को एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और फॉर्मल अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज होती है? जो असाइन ड्यूटीज हैं, जो हमारे कंपनी के बाई लॉज हैं, ऑर्डर्स हैं, जॉब एलोकेशन चार्ट है, जो हमारी हायरार्की है, उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन दी गई होती है और विद इन दैट ही वो किया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल लीडरशिप होती है वो कहाँ से आती है? वो जब आदमी के पास कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, इवन देन उसका प्रभाव होता है, देन इट बिकम्स ए इनफॉर्मल अथॉरिटी। आप ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि बहुत बार जो मिडिल लाइन में लोग हैं, मिडिल मैनेजमेंट कोई आदमी है, ही इज मोर रेस्पेक्टेड देन द टॉप मैन because he is truly able to exercise the leadership qualities, whereas the top man is not in a position to do that, because top man has a formal leadership, whereas the middle management fellow who is not got the authority to look after the whole department, but still he is an informal leader. क्या होता है इसमें? एक बात और कहना चाहूंगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कई बार हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, आपने भी फील किया होगा कि हम अपने जो असाइंड रोल है उनसे बाहर हम सोच नहीं पाते। आई ट्राइड दिस थिंग इन माई लाइफ। अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल मुझे दिया गया है देखने के लिए, एंड आई जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, जो गवर्नमेंट में आमतौर से लोग कहते हैं कि भाई मैं इससे बाहर क्यों सोचूं, वाई शुड आई गो बियॉन्ड दैट। बट व्हेन आई लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज, तो आई ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन फाइनेंस, व्हाट इज हैपनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, what is happening in sales and marketing, and unless I have a good understanding of all the functions, unless I am able to interact the people, effectively communicate with the people of different departments, unless I am honestly able to explain them that what is my intention, I am not going to overtake them, but I just want to understand. तो क्या होता है कि I acquire the leadership, informal leadership, and people start recognizing me. If only I limit myself to the laid down instructions, procedures, I say that this is my job chart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and I will not go beyond that. I can be a leader, but I will be just a formal leader, not a true leader. Now, so एक यहाँ पर एक्चुअली मैंने जो एक पढ़ा था कि लीडरशिप विदाउट टाइटल। ओके, तो ये लीडरशिप विदाउट टाइटल ये इनफॉर्मल लीडरशिप में आती है। देखिए, you can say yes, you can say yes, you can say yes. It comes without title and means without a delegated authority. When you say title, without a delegated authority, I have got no. See, how does the union leadership come? It comes like that only. People who are in the middle management or lower management are just in the worker side, and they have got the leadership quality to influence others. So management also looks at them. आप कई बार देखेंगे कि जब कभी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है तो मैनेजमेंट विल इनवाइट द यूनियन लीडर्स, और उनसे कहेंगे कि साहब इसको आप थोड़ा सा अपने वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करिए, इम्प्रेस करिए, so that they are able to perform. I'll tell you a small example. I was posted in one place as a regional manager. There was a lot of indiscipline there. There were 3-4 unions, and they're very aggressive.
They will not let the management do the work. And when I went there, I found a lot of young people. They were influenced by the union. They are all involved in the non-productive work. So I knew. Please mute. I knew that with that I cannot work because they are all going in different directions. So I had to come out of my delegated leadership authority. I was a good sportsman. I don't say I was a champion, but I used to play not many games. So I created lateral hierarchies, lateral groups. I created a cricket club. I created a badminton club. I created a tennis club. I created a carom board club. I created a cultural club, and somehow I got involved in them, not as a leader, but as an informal leader, as a group member. And with that also, I was in a position to influence the people. And ultimately, everybody started thinking, my ultimate aim was to look towards the organization. When somebody is playing a game, I told him you can leave the office half an hour before the office closes and go and play. Some people said that you are doing non-productive work. I told no. He's leaving half an hour before, but in half an hour less time, he's producing more than the people who are sitting late in the office. And what he will do, if he plays for half an hour in the office hour, he is motivated to play for another 2-3 hours outside the office hours. And then he will be playing for the office. He is playing for the organization. Yes, the bondage. yes. Definitely. And when he gets some prize and reward, and he says that yes, I am from this office, Right. It increases loyalty too. Loyalty. Yes. Ultimately, what happened? I was able to create a long operational time without any union problems. No lockdown. Right. Because when the union fellow will come and he'll say that today we are going to do the lockout, they'll say, no, sir, we will not do the lockout. We will work. Yes. If they have to do the union meeting, do it on Saturday. We will come, not on the office day. Oh, great. Really great. And I tell you, at one point of time, the union leader did a gate meeting, and because I was a regional director, they were abusing me. Because leaders can do anything. They are calling names and abusing me. And the sportsmen who were influenced by me as a leader, they went and stopped him. They said, no, we don't agree with you. Oh, great. If you are against management, we are with you. But if you are abusing somebody, we are not with you. Oh. And this fellow was really shocked to see. Right. So I tell you, these are all informal leadership. Sometimes even a formal leader can assume informal leaderships in different forums within the organization. Great. And when there is a clear direction, he can influence people, not through his formal authority, but by his informal initiatives. Yes. Because his goal is very clear. Right. And direction is very clear. Yes. Of course, the pathway can be different. Yes, 100%. I hope I am able to communicate. Yes, definitely. So there are, different factors of leadership. There is a follower, there is a leader, there is a situation, and there is a communication. What is situation? It can be any object. I will explain to you. So what is the leader? Leader has to be an honest understanding of who you are, what you know, and what you can do. So the leader has to be very clear. Though I was not doing the management work when I was playing with them, but while playing also, I know that who I am, what I know about this game contributing to the organization, and how I can convert this into organization goal. So that clarity has to be there. And you have to convince your followers, not yourself or your superiors, that you are worthy of being followed. So
I was not going to convince my superiors or my subordinates, because these sportsmen, they are all from the organization, but they are a group. So you have to influence them. And who are the followers? Followers can be different types of people who require different styles of leadership. I will come to the leadership style also. The fundamental starting point is having a good understanding of human nature, such as needs, emotions, or motivation. So unless you have a clear understanding of that, you cannot lead the group. And you should know the attributes of people, those who are around you, what best they can do. Then comes communication. So as I told you, communication has to be two-way communication, and much of it is non-verbal. I tell you, eye-to-eye communication. Sometimes verbal communication is misleading, but the non-verbal communication is very clear. I generally tell people a joke. In management, what happens that your senior has to write your confidential reports, annual confidential reports. Right. So you are not happy with him. You are not liking him. Right. But when your report is to be written, you want to let him feel that I am really very much respecting you, and I do lot of care for you. You say, sir, kabhi mere ghar aaiye na dinner ke liye. When I say kabhi mere ghar aaiye na dinner ke liye, so what is the hidden communication? That is na mere ghar kabhi mat aana. But verbal, what is verbal communication? I am inviting him. But message is don't come. And what he replies, he also smiles. He understands my non-verbal communication. Right. He says, "मैं आऊँगा ना." So what he says, what you have told, I have understood, and I will never come to your house, and I will write whatever I want to write in your CR. So non-verbal communications are more effective than verbal. Eye language. If you look at somebody with putting him in a low dignity, his half energy will go. Simply a sight will change the whole game. Situations, they are different. Same person has to behave differently in different situations. I know one of the very good speakers who used to speak on communication, who was director in the Ministry of Defense, DRDO, director level officer. But he was an expert on communications. He was a psychologist in defense. He used to provide, develop modules for defense personnel, how to elevate their. He will SSC interview modules he used to develop. But when he come to train the lower level people, glass work floor, shop floor level people, he will behave like a clown on the stage. Yes, and they will be laughing all through his class. But in the end, he has given some lesson to them. Right. But when he is going as an expert in a conference, there you will not know that he is the same person, presenting his research, analytics, data, findings. He is a scientist there. Right. So the same person has to play different role. You are a manager, but you are going in a social event. If there also you behave like a manager, possibly you will not be a good leader. But you go and mix with the crowd, enjoy the food, dance with them, hug them, pat them, so that bonding will be there. So a leader has to behave differently in different situations. So you must use your judgment to decide the best course of action and what kind of leadership style is needed in that situation. So that you have to do. So the question arises, why some people are more effective than others as a leader? Reason is
that they have got good persuasion skills. They are able to use their leadership style as per the situation, and they possess the personal attributes of a leader, which we have discussed earlier. But those attributes, again I will repeat, they are not inherited attributes. They can be acquired. Leaders are not born. Leaders are made. So लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनना पड़ता है. So there are different styles of leadership. You know, there are authoritarian leadership is there. There is a delegative leadership is there, or there is a participative leadership is there, and there is a overlap of these. And the perfect leadership is a combination of these. ये सब का balance. Sometimes the authoritarian circle will cover the others. Sometimes delegative power leadership will cover the others, and ultimately the central cone can assume different combinations of these three, and that is what a good leader will be able to do. So authoritarian means autocratic. Yes, it is to be done, and sometimes you have to do that also. I will tell you, can I take 15 minutes more? Yes, why not, please. Okay. So I can tell you one example. I was at one project, I was head of computerization. I had to implement computerization. It is way back in 1989. Oh, at the beginning. Everything was manual. And the team which was doing the work manually, the shift in charges, I was in a port environment, Navasheva port. So they said that this computerization is useless. We are more confident about manual working. But management wanted me to implement computerization. Right. But I had no manpower. I developed the whole module. Now I had to do a parallel run. For parallel run, I need people who have to work parallelly with the manual shift. Yes. But the shift people were not ready to spare their manpower, though they were surplus manpower. Okay. But they will raise their hand. No, I'm sorry, I will not spare a single person. Excuse them. Yes. And I have to implement it. Unless I do a parallel run and see what is the difference between the manual operation and computerized operation, I cannot say that it is good. So I went to the chief manager. I told him, sir, this is the problem. Unless you give me dedicated people, at least for 2 months' time, and this manpower is taken out of this team, manual team, and this shift in charges are not ready to do that. Then he said, I know they will not agree. Nobody wants change. So what do? You identify people who are good at computational skills and make a team. And which fellow will do what work in which section, in which department, which area. To make a complete work allocation on computerized environment and show it to me. So I made a team of about 12 people, right from the shift manpower. Right. I did something which the others did not like. I had shown to the chief manager. Oh. He said, don't worry, I will help you. I will do it. Okay. He called a meeting of all the shift in charges. I was also there. And he said, gentlemen, this is a very good work. Computerization is required. And we have to do it somehow. And then he says, I have taken a decision. I hope you all will agree with me and support me. Right. I am going to take out these people and put on fully computer work, parallel to the manual work. Okay. And we'll see it for 2 months. And if there is no difference, then we'll gradually shift another 2 months to fully computerized environment. Okay. I hope nobody had any objection for this. He did not ask their objection. Oh. He said, I hope nobody has an objection to this. Okay, wish you all the best, Dr. Tripathi. Go ahead. Thank you. And he left. Okay. ये तो फिर authority. Everybody was upset.
And they were angry with me. How can you take my manpower? Well, you have done surpass your capability and all those things. Right. I told them, sorry, sir, it's not my decision. If you have to challenge, go and challenge the chief manager. Right. Because he has authority. Right. But he had to take this. Otherwise, the change could never happen. Definitely. And because of that decision, our computerization was much faster than that. Right. And within a 2.5 years time, we are fully computerized during those old days. You can imagine. तो जो changes लाना होता है उसमें authority and leadership की जरूरत पड़ती है. Yes. So authoritarian or autocratic style is very important. Participative or democratic. Sometimes you have to be participative. Right. And then third is delegative or free rein. Okay. Open it. You delegate the leadership. There is no leader at all. किसको करना है कर लो. नहीं करना है. Okay. We talked about the shared leadership. Okay. Shared leadership. Right. Shared leadership. Yes. आप भी leader, मैं भी leader. आप भी leader, मैं भी leader. So, just a minute. इस सब का जो combination है, जो perfect leader है, वो किस तरह से? Then, so autocratic leader में all decision making powers are centralized. Right. He takes a decision. They do not entertain any suggestion. My chief manager did not entertain anybody's comments. Said, I hope you all agree with me, and left. So it permits quick decision making. As only one person decides for the whole group and keeps his decision to himself. And sometimes this is also very, very important. And in some types of business where decision needs to be taken, it's important. Yes. Not always, but sometimes. Yes. Then the participative or democratic style is that decision making by the group. So the leader will invite everybody, contribute, take their views, and try to incorporate everybody's views, and then take the decision. Now the decision can be consultative, taking everybody's views and then making a common decision. Or if he feels that this decision is really important, then he will be persuasive. He will try to convince people. He knows what is the right way. Right. Consultative, he has not made anything right way. He has left to the group, taken their views, and then he has formed a decision. Yes. In persuasive, a decision has already been made. It is a thin line between autocratic and democratic. Okay, तो ये दोनों के बीच का हो गया. So what he does, he pursues people, tries to convince them. And if they have got any apprehensions, any concerns, then he is able to explain them. Okay. Able to take care of their apprehensions. Okay. Ultimately makes his efforts so that everybody agrees to that. Because sometimes you are changing the whole system of a company. You are moving from one process to the other. People will not change. And people have not experienced that. Right. So they will not be able to contribute also. But they'll say, "Sab, isko nahi kar sakte hum. It cannot be done because we have been doing like this. It is good." Then he has to be persuasive. Right. That will be his persuasion skills as to how good he is at that, and that will be his true test of his leadership. Then there is delegative or free rein leadership. It can also be called as a shared leadership. That no single person is the leader in the group, and the leadership emerges as per the situation. Everybody goes together, and it is very important for some tasks like a research project. When the people all are of same level, and that's a very, very challenging. Peer leadership is a very challenging leadership. Right. Because everybody is at par. Yes. And then what happens? Sometimes you must have seen
there are take RWH, Resident Welfare Association. Now everybody is a resident. Society जो है हमारी, right? Everybody is resident. बराबर है. Nobody can say that I have been delegated as a president of the RWA. No. So what happens that today so and so has shown his good capabilities. Our society needs a lot of good construction work, and this fellow is an engineer. So we feel that yes, I think he will be a right person to become the president. Other society has a lot of health issues. People are getting sick. The water is very bad. A lot of diseases are happening. Somebody is a doctor. Say, okay, I think he is the right person to do that. You know. सोच के हिसाब की leadership. So it is a shared leadership. I hope you remember the story I had narrated you about the rabbit and Yes. story. There also the same thing happened. Yes. In some situations, I remember. yeah, the rabbit has more strength on the ground. Right. Rabbit has got more capabilities, but in the water, tortoise had got more capabilities. Right. In the ground, rabbit was the leader, and in the water, the tortoise was the leader. Yes. So this is called as a shared leadership, or situational leadership. Situational leadership. You know, Right. depending on situation, a leader is made. Right. Then another leadership style is called like entrepreneurship leadership style. So again, modernized leadership style where it's heavily task oriented and combined with very direct approach to giving instructions to employees, because you are going to set a enterprise. Now you have got the clear cut lines that how it has to be shaped, and and one person is behind this. The entrepreneur is behind this. He may be a leader also. So he has to have that capabilities and personalities so that he is able to inspire others to adapt to the whole channel of the project, whatever he has made, fall in line with that, and you know, because he has to look at everything, his customers and his employees, because you are developing business. See, there are two situations. One is where business is already there, and here you have to develop the whole thing to a level. So startup se leke scale up tak. Yes, so you have to have a strong organizational skill, strong persuasive skill, and understanding of the business environment, opportunities, threats, strengths, weaknesses, and on the same, you will be taking care of your group members also. And at every step, you should be able to give them proper communication. But decision is already taken. So, and entrepreneurship leadership style is largely, it can be authoritative as well as delegative. Yes. It's a combination. But leader is only one, and he is the entrepreneur which is behind that. Yes. Now, there are different types of traits or different types of concepts about leadership that who can be a good leader. There is a trait theory where says that individuals have got certain characteristics, set of traits. What are the traits? Like strong, desire for accomplishment, a strong desire that I have to achieve the goal. जैसे कहते हैं जज्बा है. Right. तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि एक्चुअली हमें क्या क्वालिटीज है. हाँ, तो उसके अंदर अगर है, then creativity and intelligence. Right. And you have initiatives. You take initiatives. Right. And you have got a high tolerance level. You are able to tolerate the criticism of others. Right. You are able to accept the suggestion of others. Yes. Comments of others. And if somebody says, no, sir, it cannot be done. So you have to try to understand why it cannot be done. Sometimes the idea can be very good. बहुत सारे समय में लोग criticism से डर जाते हैं. Yes. Right. Sir, just a minute. I think I have to just mute for a while. तो यहाँ पर हमें एक्चुअली जो है ना अपनी क्वालिटीज देख रहे हैं लीडरशिप की. आप में क्या-क्या क्वालिटीज होती हैं?
Okay, then, sorry, there was some obstruction. No issue, no issue, sir. So now there is a behavioral theory also. So what is behavioral theory? That leader's behavior is like that. Right. That his behavioral traits, his emotional traits. So and you are able to create a bondage, empathy with the people. Right. You are creating emotional relationship with them. Right. How you speak to them, your gestures, your behavior. So that is a theory say that if you have got a very good behavior, all the behavioral qualities with you, interpersonal relationship, interpersonal skills are with you, so you can be a good leader. Or there is a third theory, which is a contingency theory. So what is contingency theory? Because the leaders is the same, but he is able to decide as to how to deal with different situations. And under varying situations, he is able to apply different approaches. Situation के हिसाब से. And the most popular, there is a contingency model explained by Findler's model, which says that effectiveness will depend upon his motivational style, how he gets himself motivated, because sometimes there will be adverse situations. If it is a war-like situation and you are losing the battle, yes, so either you can just run away, surrender, or motivate yourself. Right. Here, motivating yourself is also equally important. Currently, like the Ukraine Russia. Yeah, more important than motivating others. Right. If you are not yourself motivated, how will you motivate others? Others, definitely. So his own motivational style, then the favorableness of the situation. Now, how adverse the situation is, and how you are able to convert. People say, no, that how are you able to convert the threats into opportunity? Opportunity, right. Situation को कैसे favorable बना सकते हैं? कैसे बना इसके ऊपर सकते हैं? depend है. Right. Yes. For example, a lot of such experiences have come during the COVID time. Right. When people were doing some business and the business was closed, Yes. a big threat came before them. Definitely. But how they used that time, because during COVID time, a lot of people stopped manufacturing, fabrics. Yes. And they started manufacturing masks, face masks. They started making sanitizers. Right. Right. So what did they do? They started manufacturing PP kits. Yes. So that means they converted the threat into an Threat into opportunity. Yes. They motivated themselves. Right. And their team. And they did not remove the people from the roles, but they motivated everybody and changed it. Yes. Definitely. A ready-made garments company started making masks and PP kits and sanitizers. Right. So that is Fiedler's theory of contingency model, where the leader, depending on the situation, adapts to different leadership style. And there is also a path goal theory, where you have already drawn the pathway, route, how you have to go. And your role is only to discipline the people, that they don't lose the track, and keep on motivating them, like climbing on a mountain. You are going to Everest. Yes. So you know what route you have to take. You can't say that, okay, we'll take a different route. Right. So you know the pathway, and you know the goal also. Yes. Then what your role has to be doing? To take care that your people, they remain in good health, their spirit is high, energy level is high, and they are constantly explained about the
situation which is going to expose you. Right. So a good leader who follows the path goal theory. Yes. कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है. So particularly some project management works, project managers. Right. Like you have been given a 2 years time or 3 years time. Within this time, you have to achieve this goal. Right. So there is no scope for doing a lot of philanthropic work or social research. Yes. But again, you have to move in that pathway while looking at the group behavior and trying to taking them along with you as a true leader. So then the situational leadership theory is also is there, and it is it's a I can say it's a variable of the contingency model. The contingency model is slightly extreme model, but again, as we have already explained, again I'll go back to the story of rabbit and Yes. rabbit. So it requires leaders' emphasis on task behaviors, right, and relationship behaviors. Right. What is the task ahead, and who can best perform under that situation? You know, he has to be the leader. Right. So that is also very important. Right. And 7 secrets. Then there are 7 secrets of inspiring leaders, and that we should all keep in our mind. What is? Ignite your enthusiasm. Yes. Navigate a course of action. You know. So first of all, you have to be highly charged, right, committed to the task, Barabar. And then you have to have a proper course of action. How you have to achieve that clear pathway, and then sell the benefits. Your group members should be explained that what are you going to achieve with that, because again they see there is always a concept called as achievement motivation. Unless there is achievement motivation, every individual have different achievement needs, you know, different types of needs. Yes. You have to take care that how the said task will be giving benefit to others, how they will be incentivized. Paint a picture. Paint a picture means you should not only talk of the concepts, but tell them in a real time story in format, because it's easy for you to remember stories rather than only concepts. So like show we are them the story. Yeah, like we are talking here, and we have been seeing some videos, some audios, some other models, some experience sharing. So these things enforce the concept within us. If I simply show you the PPT, I don't think it will be giving you that inputs. Definitely. You have to paint a picture, and picture means telling people in the form of a story, adding certain examples, certain morals, certain anecdotes, so that people are convinced that if so and so could do, if Bhagwan Ram could tell us that this is how we have to manage the things, so we should also do that. Yes, so that trust comes if you paint a picture. Invite participation. Take people's view. If somebody has a contrary view, don't ignore that. And if it does not fall in line with your pathway, so you have to be persuasive. Pursue with him. Tell him that his view is not correct in the given situation, but you have a strong logic for this, and your persuasion skill should be able to convince that fellow that yes, what you are telling is right. Reinforce optimism. Unless that is there, if we are not having a positive thinking, then possibly any effort will not be able to. And then encourage potential. Everybody has got certain potential. Now we have to identify that and encourage that, and try to link it with the goal and with the pathway that where he can contribute. In your group, if you are going to climb the mountain, there is a doctor, there is a road engineer, there is a yoga expert,
So let everybody play a role. A doctor keeps on taking the health of people on the way, their blood pressure, their everything, and make sure that everybody is in good health. If there is some road engineer, he is able to make the assessment of the way and let the people know that yes. So that kind of potential should be encouraged in the group. And if a leader is able to have all these 7 skills, 7 traits in his personality, in his approach, then possibly he can be really a successful leader. In fact, I had some more videos, but I will stop here because I have. This is the full form of the inspire, right? Yes, inspire. Yes, and it's really inspiring by sharing your 7 secrets, and it's amazing session. I have one question with you. Yes, yes, yes. मेरा एक सवाल ये है कि आपने जो बताया इंस्पायर करने के लिए, ये सारी चीजें बताने के लिए, ठीक है? कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि हम जो है ना, हम अपने आप की लीडरशिप को पहचान नहीं पाते। जी। कि हम किस टाइप के लीडर हैं? आपने ये जो सारी चीजें हमें बताई, इससे तो हम असेस कर पा रहे हैं। बट होता इस तरह से है कि जैसे ही हमें कौन सी चीज ऐसी है जो रोकती है हमें लीडर बनने से? राइट। आई थिंक हमने बीच में जब कहा था एक जो व्हाट वी हैड सेड दैट हिंदी में बताएंगे। हाँ, पहली बात तो ये है कि लीडर को अपने बारे में पता होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। एंड जब तक अगर अपने बारे में नहीं जानेंगे हम, तो हम दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अपने बारे में जानने का मतलब क्या होता है कि आई डोंट से दैट द ट्रेट्स जो आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं they are insignificant, they are equally significant. I don't say अगर आपकी फिजिक अच्छी है and you have got a good strong build, that is there. You can further refine that, make it better. So 100%. One thing you have to know that what are your capabilities. वो जैसे कहते हैं स्पोर्ट की बात करते हैं, strength and weakness. Yes. I should know what is my strength. And I have to refine my strength. Yes. See, if I am good at speaking, so I have to refine my speaking power, so that it is more convincing. I should try to acquire persuasive skills by training, retraining, understanding, reading, And if there is some weakness in me, like maybe that I may be physically frail and weak, very short in height, I cannot be noticed by others. Generally, people say that tall people become good leaders. But you remember Lal Bahadur Shastri? Yes. They're not very tall, very short person. Very short person, yes. But what he did, he honed up his power, strengths. जो उनकी strength थी. What was his strength? His strength was his integrity, his honesty, his simplicity, his communication. And he tried to hone those skills. People could see him. और weakness के बारे में क्या करें? Beginners को वही पहली चीज यही होती है कि you have to have the understanding of your own self. First, know who you are. Yes. ये अगर आप पहला स्टेप, अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, तो आप दूसरों के बारे में कतई नहीं जान सकते. So before you are going to influence others, try to know yourself. Otherwise, you will become a laughing stock. I will not take names, but you'll see there are many political leaders. They don't know themselves even. What happens there? So people don't take them seriously, right? So you have to know yourself, number one. Number two, try to empathize with people. Yes. Try to feel that nobody is wrong. Right. Nobody is small or nobody is big. Yes. Try to understand the role of everyone. Right. In an organization, in a situation, everybody is important. Yes. We should not ignore anyone and take everyone along. Only thing is that we should understand some basic things. One is
we should have good communication skills. We should be able to present ourselves as a model to people, because people will learn from you only. Yes. That's why it is said that if an individual commits a crime, he can be given a small punishment. But if a leader commits a crime, he should be hanged. Because he is able to influence millions of people. 100%. And one wrong deed is going to spoil millions of people, because they take him as a model. He is as an influencer. Yeah. An individual has committing a crime, okay, he has committed and got his punishment, but he's not going to impact the society. Right. So therefore, he has to be first a model for others. Right. And people will start learning from him only. Yes. If I talk something else and behave something else, if I'm not honest, if I don't have integrity, if I don't have a clear vision, I don't have a clearly defined pathway, if I don't have the empathy with others, if I'm not a good communicator, I cannot be a good leader. So I have to know myself, what are my strengths, hone up those strengths, what I know should know what are my weakness, try to get rid of your weakness by acquiring skills, training, retraining, training, learning, and if there are certain weaknesses which cannot be removed, so try to override them with greater strengths which are there with you. That's how many people which have got physical handicaps, still they excel in their life. Definitely. Because they hone up their skills. Yes. Yeah. If somebody is physically handicapped, but still he has got, like if both his arms are good, so he tries to use his arms. And many I have seen people are on wheelchair, his legs are not working, but he goes for a javelin throw, a discus throw, because he uses his arms. So likewise, we should know our weaknesses. And we should be self-motivated. Definitely. If we are also not charged and enthusiasm, full of enthusiasm, how can we make others? Definitely. यहाँ पर हम किसी और के कुछ सवाल है तो देखें. Yes. किसी के सवाल है कोई तो हैंड रेज करिए. काफी अच्छा बेहतर सेशन था. और लीडरशिप जो है ये सेल्फ असेसमेंट से ही बनती है प्रॉपरली. किसी को कोई सवाल है? ओके, शायद सभी लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं और काफी अच्छा सेशन था ये. लीडरशिप जो है ये हम लीड एंड डू इस तरह से बनती है. ठीक है, तो ये लीडरशिप के सेशन के लिए रियली थैंक्स टू सर डॉक्टर राम जी. एक्चुअली जो है, ठीक है, त्रिपाठी जी, डॉक्टर त्रिपाठी जी, ये सेशन काफी हमारे लिए लर्निंग था और ये सेशन में जो है हमने बहुत कुछ सीखा है. बहुत सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक बेहतर लीडर बनने की हम कोशिश करेंगे. Really thank you. Thanks a lot for the attended session, and for every audience, have a great weekend. Manish ji, thank you. Poonam ji, thank you. Sunita ji, Yogita ji, everybody. Ghanshyam ji, Dharmendra ji, Dr. Shilpi. Okay. Really thank you. God bless you all. Enjoy. Thank you very much again. Okay. Thank you. Bye. Take care. Love you all. Thank you.